में। आज है 31 दिसंबर एंड हम लोग हैं दुबई मरीना। भाई स्वागत है सभी का नए वीडियो में। आज है 31 दिसंबर एंड हम लोग हैं दुबई मरीना बीच के पास और अभी बज रहे हैं 11:30 और आप क्राउड देख सकते हो कितना ही ज़्यादा क्राउड है इधर। तो आज का वीडियो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन। दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेशन फायरवर्क्स वगैरह आज के वीडियो में वी विल बी शोइंग यू। जो नज़ारा देख रहे हो आप लोग, ये है दुबई मरीना बीच के पास का 31st नाइट और फुली क्राउडेड। ये है 31st नाइट का क्राउड दुबई मरीना बीच। अभी बज रहे हैं कितने? 11 बज रहे हैं, 11:10। क्राउड देखो भाई, क्राउड। सो ये है 31st नाइट, 31 दिसंबर और अभी बज रहे 11 बज रहे हैं। सड़क का ये हाल है तो उधर क्या हाल होगा अमलू? मिलेगी अमलू? हमने सोचा नहीं था कि इतना क्राउड होगा। लास्ट ईयर वी वेंट टू काइट बीच, राइट? ये है दुबई मरीना।
സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ. അതായത് ബീച്ചിലോട്ട് കയറാനുള്ള എല്ലാ ഏരിയയും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ക്രൗഡഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല. ये है आज 31st नाइट का क्राउड बीच के पास. ये सारा का सारा क्राउड 12 बजे की फायरवर्क्स देखने के लिए बीच की तरफ. और ये है दुबई का बाकी में जो पॉश एरिया है, इसको कहते हैं पॉश एरिया दुबई का. सारे फिरंगी यहीं आपको मिलेंगे, मोस्टली फॉरेनर्स का प्लेस है कहते हैं. मोस्टली जो अमेरिकन और यूरोपियंस होते हैं ये जुमेरा में ज़्यादातर रहते हैं. बट आज 31st नाइट यू कुड सी एवरीवन इज हियर. फाइनली वी गॉट द एंट्रेंस. अंदर घुस गए हम लोग भी. और ये पीछे अगर आप देखो उस साइड, उधर से एंट्रेंस मिल गया है. ഇടിച്ചു കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. बच्चों के लिए प्ले एरिया है यहाँ पे. ബീച്ച് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സ്പേസ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട്. ഇനിയിപ്പം ബീച്ച് സൈഡിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഫയർവർക്സ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവും. सो दुबई मरीना बिल्डिंग देखो भाई. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बीच की तरफ. और Atlantis अले So the 2 days I was talking inside. Look at this view. Wow. यहाँ पे अभी आप लोग सुन रहे हो लोगों का शोर, सीटियाँ, सब लोग एक्साइटेड है न्यू ईयर के लिए. सब लोग वेट कर रहे हैं कि काउंटडाउन कब स्टार्ट होगा. एक अलग ही वाइब है इस जगह में.
लास्ट ईयर तो हम लोग काइट बीच गए थे, वहाँ भी इवन इससे ज़्यादा क्राउड था, बट मे बी वो एरिया बहुत ओपन था तो वो क्राउड पता नहीं चला था। बट यहाँ पे आपको मतलब स्पेस ढूंढने में सबसे बड़ा चैलेंज तो हमें यही था कि स्पेस ढूंढा हमने, बट जो वाइब था यहाँ पे वो डिफरेंट था। आई मीन काइट बीच में मेरे को ऐसा फील आया कि मतलब उतना शोर शराबा नहीं था जितना यहाँ था।
बिल्कुल बीच साइड में। यहाँ आप देख सकते हो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ हुक्का ट्राई करते हुए। और ये जो आप देख रहे हो ये था रियल क्राउड वापस जाते वक्त। आप देखो ये पूरा रोड जो ट्रैफिक हुआ करता था ये क्राउड का ट्रैफिक है। सो दैट्स ऑल आज के वीडियो में। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मेरी और अम्मलू की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड। टेक केयर गाइस।